वर्ल्ड न्यूज़ से संबंधित एक समाचार है आज के हिंदुस्तान टाइम्स में 19 फरवरी के। ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस टू स्टार्ट हियरिंग ऑन इजरायली ऑक्यूपेशन। इसराइल ने जो ऑक्यूपेशन किया है, जो हमास ने युद्ध छेड़ा था उसके खिलाफ। द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट कोर्ट ओपन्स हिस्टोरिक हियरिंग ऑन मंडे into the legality of Israel's 57 years occupation of lands sought for Palestine state, plunging the 15 international judges into the heart of the decade-long Israeli-Palestine conflicts. Here, what to know? The advisory opinion यहाँ पर है. An unprecedented 52 countries and 3 organizations, including the Organization of Islamic Cooperation, are expected to give evidence in 6 days of hearing at the Peace Palace in The Hague, the seat of the International Court of Justice. The court will rule urgently on affairs probably by the end of the year. The case arrives at the court after the UN General Assembly voted by wide margin in December 2022 in favor of a non-binding ICJ advisory opinion on the legal consequences arising from the policies and practices of Israel in the occupied Palestine territory of the West Bank, OPT, गाज़ा एंड ईस्ट जेरूसलम। सो ये एक न्यूज़ था। कुछ इससे संबंधित सिक्योरिटी ग्राउंड्स क्या है। इजराइल इज़ नॉट शेड्यूल्ड टू स्पीक ड्यूरिंग द हियरिंग बट कुड सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट. इट विल likely justify the ongoing occupation on security grounds and point to the October 7 attack in which Hamas-led militants from Gaza killed 1,200 people and took 250 hostages. An Israeli soldier patrols the street in Jerusalem. और इससे पहले का जो जजमेंट था, previous judgment, it is not the first time the court has been asked to give an advisory opinion on Israeli policies or declared an occupational illegal. In 2004, the court said that a separation barrier Israel built through East Jerusalem and parts of the West Bank was contrary to international law. It also called on Israel to immediately halt construction. Israel has ignored the ruling. Impact on international jurisprudence. Experts say the decision, though not legally binding, could profoundly impact international jurisprudence. International aid to Israel and public opinion. The hearing come as Israel's offensive has killed at least 28,985 people, including children, devastated much of Gaza, and forced nearly all of its inhabitants from their homes. The war began after Hamas October 7 attack. तो ये एक बहुत बड़ी खबर मुझे लगी। और पैलेस्टाइन वॉक्स पास ऑन इजराइल चेक पॉइंट इन ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक, वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ. Palestinian representatives who speak first on Monday will argue that the Israel occupation is illegal because it has violated 3 key tenets of international law. They say that Israel has violated the पहला लॉ है, Israel has violated the prohibition of territorial conquest by annexing large swaths of occupied land. तो क्या ये कश्मीर के ऊपर भी लागू होगा? That is one. Second, violated कि पाकिस्तान ने भारत का हिस्सा ऑक्युपाई किया है, चाइना ने भारत का हिस्सा ऑक्युपाई किया हुआ है. टू
वायलेटेड द पैलेस्टीनियंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो यह तिब्बत पर लागू होगा। एंड थर्ड, एंड इम्पोज द सिस्टम ऑफ इजराइल डिस्क्रिमिनेशन एंड अपार्थीड। ठीक है, तो ये पीओके पे भी लागू होगा, पाकिस्तान जो किस तरह से अपार्थीड डिस्क्रिमिनेशन करता है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन इसको चेक करिए, जूरिप्रूडेंस, हमको लगता है एस साइलेंट होगा, जूरिप्रूडेंस होना चाहिए, बट विल चेक इट।